Assalamu alaikum. I am your science teacher Farah Dawood. Welcome you all to your new class 4. First of all, congratulations to all of you for your promotion in class 4. Hopefully you all are doing well and fine. Dear students, today is the first video class of your science subject. So I'm going to tell you how to start your notebook work. How to write in your neatly in your notebook. So the notebook should be in front of you, and this I'm going to show you the card cover first. This is your notebook card cover that you have to fill up first. The main important thing is that up to class 3 लेवल आप लोग पेंसिल यूज़ कर रहे थे, आप इरेज भी करते थे, ऑल्दो के टीचर आपको इरेजिंग से मना भी करती रही हैं और आप इरेज़र यूज़ करते थे और आपके काम जो है वो पेंसिल से होता था सब. नाउ यू आर माशाल्लाह promoted to class 4. This is the beginning of your new class. You are now the elder one, grown up child. So you should start your work with ink pen. This is called fountain pen, and you have to fill your fountain pen with blue ink pen. You can and take the guidance by your parents, your elder brother or sister, and fill up the pen with blue ink. So first turn the page. This is the card cover. It is shown on your screen that first serial number is blank. आप इसको fill मत करें. Inshallah, after the vacation, when you come to school, the teacher will tell you what's your serial number. So write down your name first. Start with the capital letter. Then class 4. बिल्कुल इसी तरह लिखना है, just like I have written. Subject is Journal Science. Branch is Girls 2. Session is 2021 to 2022. टीचर नेम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. ये भी आप जब आएंगे आफ्टर वेकेशन, so it will be filled by your teacher. And the term you should write midterm. This is all about the midterm. ठीक है? This is the filling of card cover जो आपने with blue ink pen you have to complete this. Now come to the page, first page of your copy. आपको नज़र आ रहा होगा मैडम ने आपके लिए ये पेज रेडी किया हुआ है, and you all have to ready this page by yourself. First, on the top line there is a blank of date, then the blank of day. The date is 29th April. Today is 29th April, so you have to write 29th April 2021. The day is Thursday. On the first top line, you should write course contents. आपने मिड टर्म का जो कोर्स कंटेंट है वो यहाँ फर्स्ट पेज पे लिखना है. फर्स्ट top heading line should be written with capital letters. Then unit 1, characteristics and needs of living things. This is the name of your first unit, or inshallah after the copy work, the notebook work guidance lines, I will start the first unit. The second unit is unit 2, animals. Third unit is unit 3, force and motion, and the last 4 unit is earth in the solar system. This is your course content. This is the first page that you have to write after this class, this video class.
again open the video and start writing just like me. You have to write in cursive writing. आपके लिए ये changes हैं क्योंकि now you are a grown up child now, और आपकी क्लास जैसे जैसे अपग्रेडिंग हो रही है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. सो आपने हर लेटर को सेपरेटली स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखने की बजाय कर्सिव हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए आपने तमाम स्मॉल लेटर्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करना है. एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आजकल आपके क्योंकि वेकेशन है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसको आप इधर उधर के गेम्स में और फालतू कामों में वेस्ट मत करें. यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड बाय द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स आप जो है अपनी रफ़ कॉपी में या कर्सिव हैंड राइटिंग की वर्कबुक्स मिलती हैं वो आप ले लें. अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर कर्सिव राइटिंग्स. ठीक है, तो आपने कर्सिव राइटिंग में स्टार्ट करना है. नाउ कम टू पेज 2. This is the proper work of your science copy. Again, the date on the top heading line 29th April 2021, day is Thursday. Then the heading definition of science. You should try to shade the heading by the way as shown in दिस वीडियो. आप इस तरह से नीट तरीके से पेंसिल शेडिंग करें अपनी हेडिंग के लिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ साइंस. इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट फैक्ट्स obtained through observations and experiments. This is the definition. You have to learn this definition. You have to learn the spellings. And this is the definition of science. Second heading is branches of science. Branches of science should also be written in capital. Shading should be done. There are 3 main branches of science. Number 1, biology, right? Number 2, chemistry, chemistry, and number 3, physics, physics. You should all know about these 3 main branches of science, right? This is your first copy work about your initial notebook work. ये आपने पहले कार्ड कवर फिल करना है, then you have to write down the course content and then come to the branches of science and definition of science, right? So I hope you all have clearly understand the instructions, right? आपने इस वीडियो को बार बार प्ले करके और आराम आराम से अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करना है. डू योर वर्क नीटली. Now, dear, we are going to start our first unit. Are you ready? All of you? Ready? Okay. This is your first unit and this is the first unit. I am going to tell you. Yes. The characteristics of living things. The main important things about the living things. That what are living things? बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, हमने क्लास 3 में clearly पढ़ा हुआ है the characteristics of living things. But I am going to brief all the things and give details about all the living things and also the non-living things. First थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ी सी रिकैपिचुलेशन करते हैं आपकी कि what are the living things. The living things which can breathe, grow
and move are living things, and the non-living things can't breathe, सांस नहीं ले सकते, can't grow, didn't grow, वो बढ़ते नहीं हैं, जितना उसका साइज होता है वो उतने ही रहते हैं, and move and can't move, वो चल फिर नहीं सकते. These all are called non-living things, and the things which can breathe, सांस लेते हैं जैसे आप लोग और हम लेते हैं, इसी तरह तमाम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, एंड मूव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और कि कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी काइंड्स हैं. इन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बीइंग्स के अलावा तमाम एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिशेस नज़र आ रही हैं, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, पानी के बाहर रहने वाले भी, और साथ साथ प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स और लीव्स, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, अब आपको याद आ गया ना कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, इन पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन एनिमल्स एंड plants, right? On the whole universe, we can find life in only on our earth. हम इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में, जिसमें सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो हमारे आँख से दूर हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, यूनिवर्स कहलाता है. तो इसमें जो लिविंग थिंग्स हमें मिलती हैं, जहाँ लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, जहाँ ज़िंदगी है, ज़िंदगी किसके साथ है? लिविंग थिंग्स जो ज़िंदा हैं. लिविंग थिंग्स ओनली वी कैन फाइंड लाइफ ऑन आवर अर्थ, हमारी अपनी ज़मीन है. बिकॉज इसकी क्या वजह है? इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट ऑल द कंडीशंस एंड मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ आर प्रेजेंट हेयर. जितनी भी यहाँ पर लाइफ है और जितनी भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं, वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब उनको वो तमाम ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो मिलें. और वो कहाँ मिलती हैं? जस्ट ओनली कैन फाउंड ऑन आवर अर्थ, हमारी ज़मीन पर, राइट? अब हमारी लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि सिर्फ ज़मीन पे ही हमें मिल रही हैं? वी कैन ओनली सर्वाइव एंड वी कैन नीड ऑल दीज थिंग्स जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ. दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आर लिविंग थिंग्स. वी आर ऑल्सो अ लिविंग human being, and side by side all the animals and plants are also living things. So the main important things by which plants and animals badly need basic materials and badly need requirements are क्या क्या चीज़ें चाहिए? First, the food. Yes, basic need is for our healthy life is food. भूख लगती है ना? जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है हमें भूख लगने लगती है. और जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है. वो बार बार मम्मा से पूछते हैं कि रोज़ा कब खुलेगा, बिकॉज़ उस टाइम पे मम्मा ने ढेर सारी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई होती हैं एंड हम जल्दी जल्दी से अपनी प्लेट में ले मम्मा बनाती हैं और हम खाना शुरू करते, बिकॉज़ वी बैडली नीड द फूड. जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाता है उतनी ज़्यादा हमें भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगती है. सो द फर्स्ट एंड मेन थिंग इज़ फूड, बिकॉज वी कैन ग्रो बाय टेकिंग प्रॉपर क्वालिटी फूड एंड इन प्रॉपर क्वालिटी फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी. प्रॉपर क्वांटिटी में हमने फूड लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना, बिकॉज हमारी बॉडी की जितनी नीड है वी नीड प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी फूड लेना है.
गलत किस्म की चीज़ें नहीं खानी जो हमें नुकसान पहुंचाएं और हमारी सेहत उससे ख़राब हो जाए. सो द बेसिक नीड इज़ फॉर आवर हेल्दी लाइफ वी मस्ट हैव टू टेक प्रॉपर क्वालिटी फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, राइट. सो the second number is air. Animals and plants both need proper air to live. Animals take oxygen from the air around us to breathe, right? And plants absorb second gas, carbon dioxide, to prepare their food in the presence of sunlight. So animals and plants both need air because air में से उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी होती है सांस लेने के लिए और प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना होता है सनलाइट में दिन के टाइम पे to prepare their food. The third main thing is water. Water is very important to live. Animals and plants can't survive without water. पानी पिए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते और ना ही एनिमल्स और पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं और ना ही प्लांट्स सरवाइव कर सकते हैं. आपके घर में जितने भी पॉट्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो डेफिनेटली उनको जो है वो पानी दिया जाता है. कभी पापा देते हैं पानी, कभी मम्मा देती हैं और जिन लोगों के घर में लॉन है तो माली आता है प्रॉपर गार्डनर जो कि इनको पानी वगैरह देता है. सो वाटर इज़ ऑल्सो very important to live. Number 4 is sunlight. We can get heat and energy from sunlight and plants can't prepare their food without sunlight. Sunlight जब तक नहीं मिलेगी आप जितना भी पानी देते रहें प्लांट्स को वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. जब फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. सो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो प्रॉपरली. सो द बेसिक थिंग इज सनलाइट, राइट. Now there are many characteristics of living things which I will tell you in our next science class because we have little more time left and I'm going to give you the homework also and in the next week I am going to tell you about the characteristic of living things. आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि characteristics में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो लिविंग थिंग्स में ज़रूर हो रही होती हैं. फर्स्ट, these are the characteristics which we can feel and we can see. And the first thing is growth, right? The second thing is locomotion and movements, right? तो ग्रोथ भी देखेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी कि हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम young to adult or a plant from seed to a plant. So it's a lengthy topic and I will brief you in your next class. The second thing I'm going to tell you the movement. जैसे आप चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और एनिमल्स तो भागते दौड़ते हैं, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और इसके अलावा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि आपकी रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल्स कैसे ज़्यादा होते जाते हैं, 1 से 2 और 2 से 3 किस तरह होते जाते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगी. फिर इसके अलावा आपकी और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी लाइफ साइकिल कैसे आप बढ़ते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं, ये तमाम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. सो नाउ कम टू द होमवर्क पेज, राइट. अब हम अपने होमवर्क पेज पे आते हैं. साइंस होमवर्क फॉर क्लास 4. डू रीडिंग ऑफ शेयर्ड बुक पेजेस फ्रॉम 1 to 5. अच्छा, 5 पेज तक आपके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं तो यू हैव टू रीड डाउन द पेजेस और ये तमाम पेजेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे ग्रुप में.
पेज नंबर 1 से लेके 5 तक आपने इनकी रीडिंग करनी है। और कॉपी वर्क मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। यू हैव टू फिल अप द कार्ड कवर, यू हैव टू राइट डाउन द कोर्स कंटेंट, एंड you also have to write down the definition of science in your neat notebook in neat handwriting with your fountain pen. So do you remember what is a fountain pen? Yes, the blue ink pen. और आपने अपने किसी भी एल्डर ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स की हेल्प से इंक फिल करनी है, और उसके बाद ब्लू इंक फिल करनी है, और उसके बाद नीट तरीके से अपना काम कंप्लीट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू लीव। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपना काम कंप्लीट करके आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीक क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।